Okay, so good evening, everyone. So we are just going to start with it. Let other people join. And for the time being, if you have any doubts in the last lab or even in the theory, so you can ask. Okay, so now we are going to begin with it. Anyways, in the morning, I gave you a task of computing the doubling rate of this COVID-19. Have you done that? Anybody has seen that? हम डबलिंग रेट तो नहीं निकाला बट वो वैल्यूज लिखी हुई हैं. अच्छा, लाइक मतलब कुछ क्या क्या दिखा है बताओ. वैल्यूज कितनी है, कब है, क्या है? मैम मेरे पास मैंने 4 कंसेक्यूटिव वैल्यूज ली थी 3 अगस्त से 6 अगस्त की. ओके, फाइन. मींस हाँ, बट इतने कम डेटा में हम डबलिंग रेट नहीं निकाल सकते हैं ना. हाँ, मतलब एटलीस्ट रेट हम निकाल सकते हैं. सो व्हाट वाज द डेटा? हमें अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यूज चाहिए होती है हमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. यूनिफॉर्मिटी के ऊपर डिपेंड करता है डेटा की कि थोड़ा सा तो आपको लॉन्गर ड्यूरेशन देखना पड़ेगा. एनीवेज, व्हाट वाज द काउंट ऑन 3rd August? मैम इट वाज 18,55,331. 18 lakh something, okay, roughly if we say. And what was the 16th August? मैम 16 अगस्त तो हुई नहीं. Sorry, 6th August, you said. 6th मैम August. 20,25,409. मैम अप्रोक्सीमेटली 50,000 रोज बढ़ रहे हैं. Yeah, that's the case which is happening. Yeah, so with the current date, we want to see that how much time it will take to go to double of the number which we have today. Like we have say 20 lakhs today. So if the doubling rate is 20 days or 19 days, it's nearly remain close to this 18, 19, 20, 21. It fluctuates between that. So within 20 days, we'll have 40 lakhs from this date onwards. Like in the last week of August, we'll have nearly 40 to 45 lakhs cases in India. So that's how you can make predictions using the doubling rate and other things. Anyway, so we'll see that whether that we don't want that prediction to be true, but it's going to happen. We know that.
Uh, Excuse me, ma'am. yes. Hello. One by one, please, Aniket. You want to ask anything? No, ma'am. Actually, I went to Worldometer and I have checked the data. So, as on say August of 6, it was 20 lakh 25,000 cases, and on 17th of July, it was 1 lakh 10 lakh 40,000. So, approximately 18 to 19 days is the doubling rate. Yeah, that's what it's going on today. It keeps on fluctuating between it, but it remains like that only. Yeah, Yes, ma'am. yeah. Thank you. Anybody else wants to say anything? Yes. Otherwise, we'll start with the lab part. Yeah, what we did last time in lab, we had the first experiment done of the three population growth model we discussed, and then we plotted their curves. We discussed a problem in which we were given a real data, and then we plotted the three different models for it. Sorry, linear one, exponential one, and then we had the other one which is logistic. Although theory में हमने अभी logistic नहीं पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल तक हमारा हो गया है. सो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स में थियरी में हमारा एक ही मॉडल रहता है विच इज द लॉजिस्टिक वन, एंड देन विल हैव सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑल दिस. सो प्रैक्टिकली दिस एक्सपेरिमेंट इन लैब इज डन बिकॉज इसमें वैसे भी हमें कुछ न्यूमेरिकल टेक्निक नहीं अप्लाई करना था. इट वाज मोर और लेस ऑफ प्लॉटिंग एंड कंपैरिजन एंड कंप्यूटिंग द एरर्स. अभी इसमें किसी को डाउट है? लास्ट टाइम किसी का कुछ रह गया था तो विद इन 1-2 minutes 3 minutes वी कैन डिस्कस, अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग. Anybody has any? I have not yet shared with you. मेरे को time नहीं मिला, but I'll share that sample file most probably by tomorrow on the LMS. There you can save the outputs of the first experiment so that it remains in record. That what we have done, the output is immediately saved with that file. So now, what we are going to do today, see our course syllabus if you have seen. So we have some theory part. In theory part we discuss the process of mathematical modeling and other things, and then we have some models, specific models. So one particular model we have done which is the population growth model. इसका हमारा theory भी हो गया और इसका हमारा lab भी हो गया. अब lab obviously comes every week, so in lab every week we kind of need a new model to look at, but it always remains sometimes it's not in synchronization because population growth model हमारा theory में ही अभी खत्म नहीं हुआ है, so we cannot do any other model in lab today. So what I have done is, because this learning Simulink, learning direct commands, this is also a part of your course. Like last time in the first lab we did this curve fitting toolbox, right? So that was one kind of a toolbox which we learned, that from the given data or from the already existing data how we can fit various curves and get the outputs and directly without writing programs for it. The same similar thing we are going to do today. We are going to use Simulink, that is an add-on with MATLAB. It's a different way of conducting the simulations. So first thing I want to ask all of you as a question, what do you understand from the word simulation? The name of the course is Mathematical Modeling and Simulation. So I hope by this time you are at least clear with the word mathematical modeling, but you should be clear with the word simulation. So let's first discuss this. What do you think? What do you mean by simulation? As such, कोई formal definition नहीं है इसका, but we can just have a discussion over it. मैम सिमुलेशन इज लाइक ऑनलाइन हमें वो चीज का पता चल जाता है. इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अ वीडियो और समथिंग, मतलब जिससे हमें एक्चुअल में करने से पहले पता चल जाता है हमारे एरर्स क्या हो सकते हैं या फिर इफ द वर्किंग इज करेक्ट और नॉट विदाउट डूइंग इट ऑन हार्डवेयर. Yeah, precisely correct. So simulation is also kind of a model. These are known as simulation models, right? कुछ model theoretical होते हैं जिनको mathematical models बोलते हैं या physical models होते हैं, but
simulation model is more or like an experiment which we are conducting, and if we are doing it on a computer with the help of a computer or a programming through writing some codes or softwares, we are using all the computer things in that, so that's called specifically computer simulation. Otherwise, simulation is a general word. It is also referring to the conductance of experiments in real world physically, but what we are going to do here in this course are the computer simulations. So simulation means imitation or the replication of the real thing, which is whichever is happening, and more or less you want to see that happening dynamically, right? लाइक मैथमेटिकल मॉडल जब आप सॉल्व करते हो, आपके पास फाइनल एक कर्व आ जाती है या लास्ट में एक आंसर आ जाता है कि दिस इज गोइंग टू बी द पॉपुलेशन और दिस इज गोइंग टू बी दिस वैल्यू. So the model gives you a specific solution or a function. But if you want to visualize that happening in real time, that how the things are changing with every step, so you want to have a graphical overview of that. So that is seen through simulation. So there are various ways of परफॉर्मिंग सिमुलेशंस. और ये जो GUI की हम बात करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये कईयों में होता है, कईयों में नहीं, बट फिर भी इवन इफ वी आर नॉट व्यूइंग एट इट लाइव और डायनामिकली, दैट डज नॉट मीन कि सिमुलेशन नहीं हो रहा है. Simulation is going on. It is a repetition of an experiment, the task being given to the computer, and the purpose is obviously clear. Why we are doing simulations? We want to understand the dynamics of certain things. We want to build a model, we want to build some structure. उससे पहले हम उसका simulation करके देखेंगे, so that we may not miss out anything before doing it in the real thing. Okay, so that's the meaning of it. So Simulink, I'll just tell you few things about Simulink, because otherwise this Simulink is, you know, a very let me just share the screen of MATLAB. Otherwise, as such, this Simulink is entirely a big thing to learn. It cannot be learned in one lab or in one day, and it really depends upon for what purpose you may use it. But it depends upon what particular you are doing. So right now in this course, we do not have as such any necessity to do this, but I have included it as a part. It's part of your course because you may make use of it even for your some core applications, some other courses you might be studying in your core field, computer science. So you may have the utility from here of the Simulink that can help you in certain aspect over there. So with that in mind, I'll be giving you a very brief overview of Simulink and few basic things which we can do. That is just kind of an exposure, but the rest you have to explore yourself depending upon आपको जब भी जरूरत पड़ेगा इसका use करने के लिए. It's not only in this course, it can be anywhere you want to build a project using Simulink, you can do that. Okay, so how to do that? So, okay, so in the home window of MATLAB, you can see here Simulink. So it depends upon whether you have installed it or not. At the time of installation of MATLAB, these days, whenever you install MATLAB, it always asks that you want to install MATLAB with Simulink, and then even Simulink, it asks various options. What particular requirements do you have? But I think this licensed version which we have from our institute, this has some basic features. It may not hold or show you all the libraries which are possible in Simulink. You may have to additionally download and install them. So let's just see what we have here in Simulink. So you can either click on this button Simulink over here in the top. You can see this button here, Simulink, or you can just type Simulink in command window and press enter. So you will see a new window. It's just taking some time to open because it's a heavy software. It's taking some time to open. Let me just wait for it.
Okay. I just hope you can see this Simulink start page. Yeah. Okay. How many of you used this earlier or any idea about it? Anybody? Anybody has heard about it or used it before for any basic thing? सिमुलेशंस किए हैं बट सिमुलिंक यूज नहीं किया है. Okay. What else means simulation आपने किस में किए हैं? How have you मैम done? हमने सर्किट्स वगैरह में किए हैं, Arduino पे किया है. आर्डिनो वगैरह पे. Okay, okay. You're not in done in Simulink. ठीक है. So probably you can tell me whether, because the things are when a software changes, so precisely the things remain same, the logics remain same. It's just the way simulations are executed that might be different. You can let me know in between if you have any points to discuss. Okay, so there are certain things you can see here. There's a blank model, there's a library, there's a project. Then we have this uses of code generation, like we can perform a model here, we can make a simulation model here, and then that we can transform back to generate a code. Because why we are doing this Simulink is because इसमें हमें programming करने की जरूरत नहीं है. Basic things we can just do by some controllers which we have in the Simulink, as you will see in certain examples. कि छोटी छोटी चीजें जो हम कोडिंग के थ्रू एग्जीक्यूट कराते हैं, we can actually have a Simulink model for it. उसमें हमें कुछ भी equations टाइप करने की जरूरत नहीं है, स्क्रिप्ट टाइप करने की जरूरत नहीं है, just with symbols and all we can get our answer. So if you want to generate MATLAB code after making the simulation model, so there's an option of code generation. So code generation में so firstly you have to create the project, and then you can create the MATLAB code, and even you can create the C++ code from here. I do not know how to do that. Means I have not done that ever. But in case you want to use it somewhere in future, so you can explore this one, that you create a project and then from there you can convert back to the programming language, your code. And so we can start with this blank model, because I'll just give you a brief overview of this create model. Okay, let me just see. Like as if it's showing DSP system toolbox, which basically has more applications for the circuits and signals. Let me see the library first. Okay, let's just first go to this blank model. We'll create a new model. So I've just clicked on this blank model. Simultaneously, I'll give you time to do this on your systems also. So let me share this new window, which I get to see here. So this is how it looks like, untitled. This is a new program. This is a new window which I see after I clicked on create a blank model. So here I have to do something. So the first example which I'm just going to take is through the basic sources we already have for this. Let's first look at the library. What are the options we have? What kind of projects we can create? So here it is, library browser. On the top of it, you can see here, wait a minute. Let me just on the annotation part. So here you can see this symbol. What happened? My pen is not working here. Okay, this is the annotation. This means if you click on this button, library. Your voice is cracking. Yeah, so I'll just repeat what I said. I just said there's a library here. Can you hear me that? Yes, ma'am. Yeah, just click on this. So you will get to see entire library of the sources and sinks which this Simulink is having. So you can see here the commonly used blocks, continuous dashboard, discontinuities, discrete, logic bit operations, math operations, signal routing, signal attributes, user defined functions. And you can see the toolboxes here, control system, DSP, HDL coder. So this is coming because at the time of installation, these were default options, or I did not maybe choose the additional things.
So it depends upon at the time of installation which library you had selected to be installed in the this Simulink. So you can always add and download more by searching from the internet. You can just go on Google and say if a particular library if you're looking for which is not present here. Like I am not able to find that neural networks library here. So you have this all ANN toolbox available in the Simulink. Right now, I'm not able to see that. I do not know whether you have that in your MATLAB or not, the MATLAB which you are accessing right now. So that you have to see. You can explore and download it as per your requirement. But today we are just going to look at few basic things. Firstly, I'll just show you this commonly used blocks. If you click on this commonly used blocks, okay, wait a minute. Are you able to see this window which I'm working on? Sorry, I didn't even share it. Yeah. Are you able to see it now? Yes, ma'am. Yeah. So, okay, where I was? Yeah, I was telling you this whole sort of library. मैम ये कौन से लिंक से आया था? ये लाइब्रेरी वो बटन पे क्लिक किया था ना जो मैंने वो सिमुलिंक Okay, का okay, अनटाइटल्ड पेज जब हमने खोला उस पे एक लाइब्रेरी का ऑप्शन था वहां से तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो ये बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं तो फर्स्ट है कॉमनली यूज्ड ब्लॉक्स commonly used blocks may you can see this bus creator bus selector data type conversion you want to add a delay you want to add a gain means you amplify your gain is basically the multiplier signal integrator is going to do the integration so it's clear from the name of the block itself what exactly it is going to do so integrator is going to integrate the function which you will be inputting I'll show you some examples scope is actually used for display or the output of something like graphically we want to see anything so we use this scope we have sum you want to add or subtract so there is a sum block here there's a switch block here are you following this I'm not using annotations I'm just using the mouse are you able to see this which I'm telling yeah in the right hand Yes, side ma'am. window I'm telling you there is a switch operator there is a switch Yes, ma'am. okay so there's a terminator there's a vector concatenate even I don't know the most of them because it really depends on आपके requirement क्या आप उसके according उसको सीख के use कर सकते हो they are not difficult to learn or use it all depends upon your environment continuous then we have continuous में आपके derivatives आ जाएंगे integration आ जाएगा state space transfer function ट्रांसपोर्ट डिले वेरिएबल टाइम डिले इंटीग्रेटर लिमिटेड मतलब आप लिमिट्स देना चाहते हो इंटीग्रेशन की तो दैट इज इन दिस ब्लॉक इंटीग्रेटर लिमिटेड second order integration is there if you want to integrate something twice that is there so we have then this discontinuities in discontinuities you have step functions rate limiter I not know their means for what purpose they are used Ma'am, can you please explain PID once? PID where it was in the PID controller. It's in the please mute yourself. Okay, I'll first take the basic ones and then we can talk about this PID also. Firstly, हम कुछ basic examples करेंगे, then I'll take this PID controller also. Logic and bit operations to use the if else statements and other things so there are many options I'm not going to go through all of them I'll be just starting with directly an example so firstly I'll just go to the commonly used blocks so the first example which we are going to have is the first statement of the question which we are going to do is through Simulink so what we are doing you amplify a sine wave you input a sine signal and then you amplify the signal by a certain number so iske liye hamare paas gain wala block use hoga because gain means amplification and if you do that and then the output we want to view तो हमें आउटपुट भी व्यू करना है और इनपुट भी व्यू करना है मींस एम्पलीफाई होने के बाद सिग्नल क्या हुआ वो भी हमें आउटपुट दिखना चाहिए और
इनिशियली विदाउट एम्पलीफिकेशन हमारा जो साइन वेव था वो भी हमें अपने फाइनल आउटपुट में व्यू करना है. सो दैट्स आवर टास्क. So this thing we are going to do using Simulink, that we will input a signal and then we'll amplify it and we'll look at the output. So this is the most basic example, but this will give you a fairly good idea of how to use the basic commands in the Simulink. So I'll just go here where I opened my first project when we clicked on the new blank model. So this was the create blank space in front of you. Now I want to incorporate the, I want to include the blocks here. So I will have to go to the library. So I'll be switching windows. Let me see if, because this is a limitation with the Zoom actually. It shows you one thing at a time. Either it will show you the library one or it will show you this one. So let me just click on the library. Yeah, so from वहाँ which पे मल्टीपल शेयर का भी ऑप्शन होगा. I couldn't find हम that. मल्टीपल शेयर कर लीजिए. हम शेयर स्क्रीन के ऊपर ही आएगा क्लिक करके. Okay. Let me see. I'm getting here portion of the screen. Optimize screen sharing. Basic में I'm not having the option of multiple actually. Screen is the option. Okay. If I'll just click on screen, maybe it will show. Are you able to see this library browser right now? No, ma'am. We can see the library browser. You can see the library browser, है ना? Now tell me if I open this one on title. Yes, ma'am. वो नीचे 3 tabs भी दिख रहे हैं. हाँ जी, दिख ma'am. रहा है ना? दिख हाँ, रहा है. बस ठीक हाँ है. जी. This is the right option. तो हम screen share ही मैंने कर दिया है. Okay, I didn't know about this option. ठीक है, thank you. So what we are going to do? Let me just, क्योंकि simultaneously मुझे दोनों को use करना है, library को भी और उसको भी. Okay, let me just drag this one. Okay, yeah, what I was, हमने क्या include करना है? हमने sign signal करना है include, so that you will find in your sources, because certain source should be there, which is sources जो यहाँ पे लिखे हैं sources and sync. So source is for input, sync is for output. So source में हमें चाहिए, यहाँ पे you can see there are many sources. There's a random number generator, there's a uniform random number generator. So you can use them. There is a constant if you need, but here is a signal generator. So you have to yourself define the signal, customize here. But this sine wave is present there as one of the options in the sources. So what you need to do is to click on this sine wave, and you have to include this into the window of the project. Let me just do this. Where exactly I was? Here I was. Yeah. So now you can see the open blank model and the library I have selected this sine wave. So just need to drag it from here. Okay. Wait a minute. Why I'm not able to do this? Because if this window is open, let me minimize this one. Why it's not going there? हाँ, हमें ड्रैग करना है इसको. हाँ, इसको ड्रैग करके आपको उस विंडो मैम राइट क्लिक करो. मैम राइट क्लिक करो. ऐड ब्लॉक टू मॉडल. अच्छा, बट ऐसे हो जाता है. अभी हो गया होगा. Not done yet. Actually, yeah, it's done. Right click से भी हो गया है, but otherwise you can simply drag it to that window. What my problem right Yes, now? ma'am. हाँ, वो मेरे साथ दोनों एक साथ. ड्रैग एंड ड्रॉप से चल रहा है मैम. हाँ, चलेगा वो. बस मेरे दोनों विंडो एक्चुअली एक साथ खुल नहीं रहे हैं. वो मिनिमाइज हो जा रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है. But you मैम can. उसका साइज स्मॉल कर लो, हो जाएगा. वही कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ. मैम आप विंडोज एंड एरो की से कर लो, 2 विंडो साथ खुल जाएंगी.
हाँ वही कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग दैट ओनली, अभी हो गया है, पहले नहीं हो रहा था। ओके सो हेयर इट इज I don't need this one. Anyway, so time being, you do this drag and drop. Where is my other project? Yeah, here it is. It's not working with me right now. I don't know why it's not working. Anyways, you are able to do that, drag and drop. So the sine wave, when you drop in the untitled project, so there you see, it will ask you for the amplitude. What is the initial amplitude you require? So initial amplitude by default इसका 1 है, आप कुछ भी दे सकते हो. Are you able to see this block parameters window? Yeah, so I'm changing the amplitude to 2 say. So otherwise नहीं भी change करना चाहते तो that's fine. ये मैंने amplification नहीं किया है अभी मैंने सिर्फ उसका जो original साइन वेव का जो इनपुट है उसका एम्पलीट्यूड ही डिफॉल्ट 2 कर दिया है, उसको आप सेम भी रहने दे सकते हो, इट डज नॉट नीड एनी चेंज. आई वाज जस्ट टेलिंग यू एन एडिशनल ऑप्शन. अभी ये हो गया हमारा इनपुट. नाउ द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू एम्पलीफाई दिस. सो एक तो ऑप्शन वही है कि आप फिर से लाइब्रेरी में जाओ, वहां से आपको गेन का ब्लॉक ढूंढना है. गेन बिकॉज द गेन ऑफ यस मैम. yes Ma'am, please. can you repeat, Okay. ma'am, those parameters that you said? Okay, you just click on this one. साइन वेव जो आपने इनपुट कराया है, आप उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे जब अपने ब्लॉक के ऊपर, तो ये विंडो दिखेगा. ये दिख रहा है आपको विंडो जो ओपन हुआ है? Yes, 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 ma'am. yes. हाँ, तो Yes, ma'am. एम्पलीट्यूड यू कैन सेट फ्रॉम हियर. उसका डिफॉल्ट एम्पलीट्यूड 1 है, तो आप 1 ही रहने दे सकते हो, नहीं चेंज करना है तो. सो आई जस्ट ऐसे ही फॉर ट्राइंग आई जस्ट चेंज इट टू 2. ओके, तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, लाइक इफ यू वांट टू अप्लाई एनी बायस, सी दिस इज द ओके, यू कैन सी ऑन द टॉप ये आउटपुट क्या दे रहा है. आउटपुट दे रहा है एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई करेगा साइन. Obviously that's the phase. If you want to define any bias, you want to add a bias to the signal, डिले डालना चाहते हो, मीन्स वो सब ऑप्शंस हैं इसमें. बट अभी हम फर्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं, तो आई एम जस्ट नॉट कॉम्प्लिकेटिंग दिस, जस्ट चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ इट एंड देन यू जस्ट ओके एंड दिस इज अ साइन वेव विद एम्पलीट्यूड 2. अब यहाँ पे वो फर्क नहीं दिखेगा आपको, आउटपुट में दिखेगा वो कि एग्जैक्टली इसका एम्पलीट्यूड जो है 2 यूनिट्स है. इज इट फाइन? Yes, ma'am. Okay, now we want to gain the amplitude. हमें amplify करना है by से 3 यूनिट्स हम इसका एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं. सो हमें इसको गेन का एक ब्लॉक अब इसके साथ अटैच करना है. दिस इज अवर इनपुट, राइट? अभी तो आप क्या करोगे, यू जस्ट फॉलो ऑन द स्क्रीन. आप यहाँ पे अभी दोबारा से लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट डबल क्लिक ऑन द स्क्रीन. You just double click on the screen in this window जो हमारा जहाँ हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं. So you'll get to see an option like this, create annotation. मैंने सिर्फ डबल क्लिक किया है और कुछ नहीं किया है. So double left click. So then I'll just write gain. तो इसमें एक्चुअली जो लाइब्रेरी में ब्लॉक्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं. अगर आपको बाय नेम उनका नेम याद है, so just type that. You'll get to see the options. So मैंने gain लिखा and so you can see I'm having so many options. So I'll just choose the first one, gain. So ये gain का उसने मुझे एक block create करके दे दिया, right? Is that fine? Did you Yes, follow ma'am. that up? या जस्ट कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे डबल क्लिक स्क्रीन पे कहीं भी करना, गेन लिख देना है, तो वो जो भी सर्च करोगे उसमें गेन आपको दिख जाएगा. तो अब ये गेन है. अब हमने सपोज गेन करना है बाय 2 टाइम्स और बाय 3 टाइम्स हमें एम्पलीफाई करना है. सो फिर से इसका पैरामीटर चेंज करेंगे. तो हम गेन ब्लॉक वाले के ऊपर डबल क्लिक किया है मैंने, तो यू कैन सी गेन का डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे है 1. सो यू मेक इट 3. सपोज एम्पलीट्यूड को हम 3 टाइम्स करना चाहते हैं, तो मैंने गेन कर दिया है 3. तो यू जस्ट प्रेस अप्लाई. आई थिंक बिना अप्लाई करे भी ओके करोगे सीधा तो भी हो जाता है. Okay, so this is done.
तो अभी हम इनको कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए यू कैन सी इनके एरोज बने होते हैं ब्लॉक्स के बाहर। तो ऑब्वियसली इनपुट वाले का एरो राइट साइड पे होगा, बिकॉज इनपुट के लेफ्ट में किसी को कनेक्ट नहीं होना है। इनपुट हैज टू बी फेड इनटू द सिस्टम। जैसे लेट मी जस्ट टेल यू दिस। सो ये आप इनको सिलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली वहां पे एरो क्रिएट हो जाएगा। आपको ड्रैग करना है सिर्फ। यू जस्ट क्लिक ऑन दैट। आई विल रिपीट दिस, वेट अ मिनट। आपको ये दिख रहा है, यू जस्ट क्लिक ऑन द एरो विच इज हियर, select this one and drag the arrow up to this point. You just try to connect them through dragging and it will be done very easily. So let me first finish this example, then I'll give you time to try this and then you can do that. So this is connected. This is our input sine wave. This is gained by multiplier 3 times. And now we want to see it. We want to visualize it, that whether this is happening, where it is happening. तो विजुलाइज करने के लिए हमारे पास, अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको वहां से सिंक मिलेगा। जैसे सोर्स में इनपुट होता है तो सिंक में आपके आउटपुट देखने की चीजें होती हैं कि यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। तो अदरवाइज आप यहाँ पे वैसे ही डबल क्लिक करो and I am going to type scope. So scope is just a viewer. It is provided by Simulink. It's kind of a window, figure window, जिसमें हमें graphically visualization होता है simulation का। तो आपको ये लिखना है scope यहाँ पे and you press enter. तो ये scope का window बन जाएगा and you see it is asking me for number of input ports. How many input ports I need for this scope? So that means मुझे जो final output देखना है उसमें मुझे कितनी आउटपुट्स देखनी है, राइट? सो I'll choose the two options, two input ports, because मुझे ओरिजिनल सिग्नल को भी फाइनल आउटपुट में देखना है और एम्पलीफाई होने के बाद भी देखना है। सो ये जो नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट्स इसने पूछा था, आई सिलेक्टेड दैट 2. इज दैट क्लियर अप टू हियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? सो अब हमें इसको स्कोप को भी कनेक्ट करना है विद द आउटपुट। तो एक तो एम्पलीफाई होने के बाद जो आया है उससे कनेक्ट करेंगे। लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस हियर। तो एक एरो डिफॉल्ट इसने ये अपने आप ऑप्शन दिखाता है, आपको जस्ट वो सिलेक्ट कर लेना है कि उस कनेक्शन को जोड़ने के लिए। सो आई जस्ट सिलेक्टेड दैट, इट कनेक्टेड द एम्पलीफाई होने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको उसने स्कोप का इनपुट बना दिया है। और जो दूसरा इनपुट पोर्ट मैंने स्कोप में रखा था, अब उसको हम पहले वाले के साथ कनेक्ट करेंगे। सो ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज टू गो हियर। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू थ्रू द एनोटेशन। वेयर इज दैट? Yeah, so let me just show. So we connected this. Now the other connection I want to make like this. From the original input, I want to get it connected with the final output viewer, which is scope. So एक आपको यहाँ पे भी connection बनाना है। So उसके लिए what you need to do is basically you will be just selecting. You'll just select the input port over there and then you will get to know that how it is going to be connected. Automatically it will show you the path. You just drag it in between the two arrows, it will automatically get connected. ये आप अभी करके देखोगे, आपको कुछ समझ में आ जाएगा that how it is happening. And now I'm just pressing the space bar key. So when you press the space, let me just correct this one. ये शायद कुछ गलत हो गया है. From here I will not be able to drag this one. Earlier it was connected like that. Yeah. So this is the connection we have made and I just zoomed it. यहाँ पे zoom करने का option है, और otherwise आप space bar key press करोगे तो it shows you the full fit into the window. So now we want to run the simulation. So we want to run the simulation. So here is the button you can see run on the top in the second bar. So when you click on this run,
this simulation is going to run. It will take some time. So output अभी आपको आप scope पे click करोगे तो दिखेगा. So just double click on the scope and then you will be able to see the output. Let me see whether it is there or not. Yeah. Let me just erase the annotations. Yeah, so you just double click on the scope and you can see the two outputs there. One is the non-amplified signal, the blue one. This is the original sine wave. मैंने original भी उसका amplitude 2 दिया था. So you can see this 2 over here. Originally भी मैंने उसका amplitude 2 units दिया था, तो ये 2 units है. Or after amplification, obviously it's becoming 6 because we give a multiplier of 3, right? So this is 6. So it's multiplied by 3. The amplitude has been multiplied by 3. So that's our gained output and this is our input. तो आप अपने स्कोप में एक आउटपुट भी रख सकते हो अगर आपको सिर्फ एम्पलीफाइड वाला सिग्नल देखना है, दूसरा नहीं देखना है. सो यू मे जस्ट स्किप दैट, बट अदरवाइज दैट्स द वे यू डू. सो इसको आप फिगर को सेव कर सकते हो फ्रॉम हेयर, फाइल, प्रिंट टू फिगर. जैसे आप प्रिंट टू फिगर करोगे देन इट विल गो इनटू द मैटलैब फिगर विंडो एंड देन फ्रॉम हेयर यू कैन सेव एज आइदर png, pdf और whatever output you want to save, or even the MATLAB figure. So I'm not saving right now, just told you the steps how to do that. So I'm just closing this one and giving you some time. So you try this on your system and ask me any doubts if you have in between. All of you please. What we have to do with output? You just save it. Ma'am, no option is. Yeah, sorry. Ma'am, there is no option of saving. When you clicked on this scope window now. Yes, ma'am. You go to file. So you go to print to figure. Okay, ma'am. प्रिंट टू फिगर पे जाओगे तो फिर वो फिगर 1, ये मैटलैब वाली फिगर वाला विंडो खुल जाएगा. तो यहाँ पे सेविंग का ऑप्शन Yes, ma'am. ना, फाइल सेव एज, यहाँ से सेव कर सकते हो आप उसको. Okay, ma'am. Yeah, so please all of you please take Okay, some ma'am. time and try this, and in between ask me if any doubt you are having. So that was the simplest possible. I mean, which format do you have to? Whatever you like, because हमें output उसको save है. So PNG is okay, PDF is also fine, but PNG, JPG is fine. Okay, okay. Ma'am, do we have to label the X and Y lab? You can do that. See, ये तो हम बस ऐसे सिमुलिंक सीखने के लिए कर रहे हैं. It's okay. आप फिगर की फॉर्मेटिंग करना चाहते हो कर सकते हो. Means to Okay, save it ma'am. for कि this is our Simulink experiment 1. आप फिगर का टाइटल Okay. दे दो कि ये Simulink का एक्सरसाइज 1 का आउटपुट है, so that later on you may not. और आप इसको भी सेव करोगे अपने मॉडल को भी. यहाँ से अभी अनटाइटल्ड ही है, ये रन तो कर गया है, बट यू वांट टू save it. So from file you save and then you keep a name of it. So say this is our experiment 1. So it's a default extension .slx. So वो default आएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है. So then you save it so that next time जब भी आपको ये experiment मिलेगा आप सीधा उस पर क्लिक करोगे. ऑलरेडी उसमें ये ब्लॉक्स प्रेजेंट होंगे, आपको सिर्फ रन करना है और आउटपुट दोबारा से देख सकते हो. और अब आप चेंजेस कर सकते हो इसमें. जो आपने 3 का मल्टीप्लायर दिया था उस 3 को चेंज कर दो एंड देन यू सी द आउटपुट. सो यू कैन जस्ट परफॉर्म ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रायल्स विद इट टू वेरी द आउटपुट. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ यस, हाँ जी बोलिए. मैम जब प्रिंट टू फिगर कर रहे हैं तो फिगर खुल रही है अलग से, लेकिन उसमें कोई प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा. फिगर खुल रही है बट उसमें ऊपर फाइल में होगा ना, फाइल सेव, फाइल में जाके देखो. मैम ऊपर कोई बार ही नहीं आ रहा मैम, इट्स जस्ट अ फिगर. अच्छा, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, मैं देख लेती हूँ.
Just a second. मैम जैसे ये फिगर खुल गया तो फिगर पे कोई कोई वो नहीं आ रहा, मतलब लाइक ऑप्शंस नहीं आ रही कुछ। अच्छा, ये आप ऑनलाइन कर रहे हो क्या? यस मैम। अच्छा, फिर मे बी यहाँ पे नहीं आ रहा हो, बट ये सेव तो हो जाता है यहाँ पे। फिर आप स्निपिंग टूल से कर लो इसको सेव, इफ यू वांट टू, बिकॉज ऑनलाइन शायद मे बी कुछ डिफरेंट वे होता हो सेव करने का, बट आना चाहिए। अगर आप डेस्कटॉप पे करोगे वहां तो आता है। एनीबडी एल्स फेसिंग दिस इशू? स्लिपिंग कर लेता हूँ फिर मैम। आप इसको स्निप टूल से करके देन यू कैन सेव इट। ओके मैम, थैंक यू मैम। या ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, यस। मैम ये जो स्कोप है इसमें मैम एक ही इनपुट देने का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, दो नहीं आ रहा। मतलब नहीं मतलब मैम। जब आपने उसको एंटर किया, जब आपने स्कोप को, वो उसी टाइम पे पूछता है बिगिनिंग में नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट्स। मैम ये तो पूछा ही नहीं था। अच्छा, मैम फिर राइट क्लिक करके राइट मेन्यू क्लिक खोलता है करके, हाँ तो आप, उसके उसमें है ऑप्शन। हाँ आप अच्छा उस राइट क्लिक। टॉप के ऊपर, हाँ जैसे सिग्नल्स एंड पोर्ट्स में जाओगे हम्म। तो यू कैन सी दिस नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट्स। तो 1 2 3, इवन मोर देन दैट यू कैन सिलेक्ट। तो यहाँ से भी एंटर कर सकते हो। अदरवाइज वो बिगिनिंग में पूछता है, कई बार वो मिस हो जाता है जल्दी जल्दी में, बट यू कैन ऑलवेज डू इट लाइक दिस। थैंक यू मैम। मैम प्लीज ये ऑप्शन दोबारा बता दीजिए। हाँ, स्कोप बटन पे जाके वहीं उसको सिलेक्ट करके आप उसको राइट क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा यहाँ पे सिग्नल्स एंड पोर्ट्स। सिग्नल्स एंड ओके मैम। पोर्ट्स में नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, 1 2 3 और इवन। Okay, so yes, please ask if anybody is facing any difficulty in this, or all of you have done with this.
then we can go towards the next. मैम ये साइन वेव है किसमें? मेरे वाले में दिख ही नहीं रहा किसी भी केस में. सोर्सेज में जाओ, लाइब्रेरी में जाके सोर्सेज में जाओगे ना, देयर यू विल फाइंड इट. ऐसे करके देखो, यहाँ से भी आएगा. सी मैंने डबल क्लिक करके साइन टाइप किया है, SINE, तो यहाँ से भी दिखा रहे हैं साइन वेव. DSP सिस्टम टूल बॉक्स में भी है, सोर्सेज में भी है. तो यहाँ से क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा साइन वेव. अच्छा नहीं, बट ये डिफरेंट है, ये डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है. बट लेट मी जस्ट सी इट अगेन. साइन, if you want to select, no, they are all different options. अब sources वाला ही आपको लेना है, जो otherwise the same command is having different, it saves with different names. मिल गया आपको? Yes, ईशान. सोर्सेज में जाके ही है. हाँ, सोर्सेज में इनपुट सिग्नल जो भी आपको देने हैं, इनपुट जब भी फर्स्ट चीज जो देनी होती है हमें इनपुट ही देना होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें सोर्सेज में ही मिलता है. ओके मैम. Anybody else is having any doubt in this? Or shall we move to the next example? Ma'am, please give 2 minutes. Actually, it's working very slowly. Okay, fine. No issues. Take your time.
मैम जब हमने पूरा फिगर बना लिया है, जूम कर लिया है हमने, उसके बाद इसको रन कैसे करना था? ये ऊपर ग्रीन बटन है ना, एक प्ले प्ले जैसा बटन है, यहाँ पे रन, ये बार में यहाँ से भी हो जाएगा सिमुलेशन वाले, सिमुलेशन में जाके रन प्रेस कर सकते हो। यू कैन सी द शॉर्टकट कंट्रोल टी। Control T is a shortcut to run the simulation. And then for viewing the output, you just click on the scope and then you will see. Ma'am, nothing is being shown. Can I share my screen? Yeah, please. Let me stop share. Yeah, that's fine. Then when you, yeah, you can see here the output. Yeah, the output is there. Everybody else done with it? Yes, ma'am, done. Okay, then I will take to the next example. So the next example which we have to do is to understand the if-else statement using Simulink. How to incorporate this if-else logic statement in Simulink. So for that, I'll be choosing very simple example and will show you how it works using the switch operator. So there is an option operator of switch in Simulink, and using that we'll be building the example. So because इसमें कुछ पूरा हम problem नहीं solve करें, it's just a way to understand how to incorporate this, because this might be useful if you make some bigger project. So almost in every program we have the logical statements, like we have to use if-else logic, so it might be useful there. Okay, so let's just first go to this. So I'll now start with a new experiment. I'll say file new blank model. The earlier model I saved. Now I've started with another model, that too blank. So now I want to again have something for input, something to compare the logic with, and then something to display my output. Because usually हमारे if else statements ऐसे होती हैं कि अगर ये है तो ये आंसर आ जाए और ये है तो ये आंसर आ जाए. Something like that we have to think of. So we are starting with a very simple structure. So starting में I'll go to the library first. Where is the library? Okay, यहाँ से हम दोबारा से library खोल लेते हैं. So library में let's just take from the source only constant. Because आप इसका देखो difficult बना सकते हो, complicated बना सकते हो, depending upon आपकी input कहाँ से आ रही है. आप input भी कहीं से और call कर सकते हो. Like you can see the sources में हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है ये सबको, sources में जो blocks हैं. तो ये sources में हमारे पास from file option भी होता है, from file, कि आप ऑलरेडी आपके पास वर्क स्पेस में फाइल है, वहां से अपना इनपुट लेना चाहते हो, मींस जो आपकी वैल्यूज हैं जिनको आप टेस्ट कराना चाहते हो, कि वो वैल्यूज सपोज आप टेस्ट कराना चाहते हो कि कोई वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. आपने सपोज कोई प्रोग्राम रन किया, उसकी आउटपुट आई, अब आपको यहाँ पे सपोज सिमुलिंक में आउटपुट डिस्प्ले कराना है. सो इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग. तो ऑलरेडी आपकी जो वर्क स्पेस में फाइल है आप वहां से भी ले सकते हो, डॉट मैट की वो फाइल होती है. आप डायरेक्टली फ्रॉम वर्कस्पेस भी वेरिएबल उठा सकते हो यूजिंग दिस
सोर्स SIMIN यहाँ पे है, ये फ्रॉम वर्कस्पेस लिखा हुआ है एज यू कैन सी. ओके, लेट मी जस्ट मार्क दीज वंस. तो ये सारे ऑप्शंस हैं सोर्सेज में. आप फाइल से ले सकते हो, वर्कस्पेस से उठा सकते हो, या फिर डायरेक्टली उसका वैल्यू दे सकते हो. सो राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस वन कांस्टेंट. मैं डायरेक्टली उसका वैल्यू यहीं पे इनपुट कराना चाहती हूँ. सो आई विल बी जस्ट चूजिंग दिस कांस्टेंट वन. तो इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो आप अपनी प्रोजेक्ट में, बट आई विल जस्ट do it like control I is the option if you want to add this block to your model. तो उधर जो भी मॉडल खुला है उसमें ये ऐड हो जाएगा. So let me see whether it's there. Okay, yeah, so you can see it's there, the constant. Sorry. और यहाँ पे इसका डिफॉल्ट वैल्यू है कांस्टेंट का 1. आप इसको चेंज कर सकते हो. सो ठीक है, विल चेंज दिस वैल्यू लेटर. अब हमें इस पे कुछ लॉजिक लगाना है कि अगर ये वैल्यू इतना है तो ये आंसर आए, इतना है तो ये आंसर आए, राइट. सो लेट्स वो लॉजिक अब कैसे लगाएंगे. फॉर दैट वी हैव टू यूज द स्विच ऑपरेटर. सो स्विच ऑपरेटर आपका आता है, यू अगेन हैव टू गो बैक टू द लाइब्रेरी. इन सिग्नल राउटिंग, in signal routing there is this option of switch. You can see this. In signal routing there are many options: bus element in, bus element out, environmental controller, multi-port switch भी है, वो थोड़ा सा advanced है इस switch से, but firstly we need to learn this basic one. This is just switch. So it's here, so I'll just shift this one also to the my blank model. तो यहाँ पे मैंने switch भी डाल दिया है. तो इसके डिफॉल्ट 3 पोर्ट्स आएंगे. 3 पोर्ट्स आएंगे बिकॉज एक पोर्ट से आपको, लेट मी जस्ट डू दिस वन. इसके एक, यू कैन सी द 3 इनपुट पोर्ट्स. इट डिड नॉट आस्क मी टू एंटर द नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट्स, बट डिफॉल्ट इसकी 3 पोर्ट्स आएंगे बिकॉज यू कैन सी जो मिडल में होगा यहाँ पे हमारा कंपेयरिंग होगा, जो भी हम कंपैरिजन करना चाहते हैं. जैसे बाय डिफॉल्ट ये ग्रेटर देन 0 है. आई कैन चेंज दिस कंपेयरिंग कंडीशन, जो हम कंपेयर करते हैं, इफ दिस इज दिस. तो जो इफ वाली कंडीशन है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं. आई विल शो यू राइट नाउ. बट ये मिडल में होता है हमेशा, जो कंपेयरिंग लॉजिक वाला कंडीशन होता है. तो एक तो इससे कनेक्ट हो जाएगा इनपुट से, बिकॉज जैसे ही इसको इस कांस्टेंट से इनपुट मिलेगा ये कंपेयर करेगा. और जो बाकी दूसरे पोर्ट हैं वहां पे हमें जो भी यू विल सी व्हाट वी हैव टू कनेक्ट. सो वहां पे हमें 2 आउटपुट्स बेसिकली जो डिस्प्ले कराने हैं वो डालने हैं. तो ऊपर वाला इनपुट पोर्ट है, ये ट्रू के लिए होता है और ये फॉल्स के लिए होता है. So it's a default structure of the switch port which you need to know. The middle one is for comparison. ये directly इससे connect होगा, will do the connection. और ये वाला होता है कि if that comparing condition is true, तो फिर हम जो चाहते हैं कि जो output आए वो यहाँ पे हम देंगे कि we want this output to occur. और अगर ये false हुई condition तो then that will be connecting here. तो 3 आपको इसमें कनेक्शन बनाने हैं. कंपेयरिंग कंडीशन वाला, ट्रू वाला, फॉल्स वाला. ये हमेशा ट्रू होता है ऊपर वाला, ये हमेशा फॉल्स होता है. तो अब हम इसको चेंज करेंगे हमारी कंपेयरिंग कंडीशन भी. लेट मी जस्ट फर्स्ट इरेज दिस वन. एंड आप स्विच बोर्ड के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो इट विल आस्क यू द थिंग्स. So threshold, so firstly you can see this is criteria for passing first input. तो इनपुट का क्राइटेरिया किस तरह का होना चाहिए. सो ये इस तरह का क्राइटेरिया ले रहा है कि सम इनपुट इज देयर व्हिच इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड. सो थ्रेशोल्ड हमें यहाँ पे देना है, बट आप क्राइटेरिया भी चेंज कर सकते हो. आप किस तरह का कंपैरिजन चाहते हो. आप ग्रेटर देन इक्वल टू चाहते हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन चाहते हो, या नॉट इक्वल टू चाहते हो. सो इसमें हमने ओके ग्रेटर देन इक्वल टू वाला सिलेक्ट कर लिया. और थ्रेशोल्ड आप अपनी मर्जी से दे सकते हो. सो लेट मी जस्ट गिव यू द थ्रेशोल्ड 3. हम 3 से कंपैरिजन करेंगे कि अगर हमारा नंबर 3 से बड़ा है तो समथिंग शुड हैपन, अदरवाइज द अदर थिंग शुड हैपन. सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ कंपेयरिंग. हमने कंपेयर किस तरह की कंडीशन करनी है वो भी चूज कर लिया और थ्रेशोल्ड भी दे दिया है. एंड देन यू जस्ट चेंज दिस, अप्लाई दिस एंड ओके. सो यू कैन सी आपका कंपेयरिंग कंडीशन चेंज हो गया. अभी हमें इसका ट्रू और फॉल्स का आंसर इसको बताना है. तो सपोज ट्रू और फॉल्स का आंसर आपका, क्योंकि ये एक स्विच पोर्ट है, इसके 2 ही आउटपुट्स हैं. तो बेसिकली आइदर द कंडीशन विल बी ट्रू
or the condition will be false. तो आप एक कांस्टेंट भी प्रिंट करा सकते हो कि अगर ट्रू है स्टेटमेंट तो आउटपुट 1 आ जाए, और अगर फॉल्स है स्टेटमेंट तो आउटपुट 0 आ जाए। बिकॉज मोस्टली जो भी बाइनरी चीजें होती हैं तो उनके आउटपुट हम नंबर्स की फॉर्म में ऐसे लेते हैं, 1 इज सिग्निफाइंग ट्रू, 0 इज सिग्निफाइंग फॉल्स, और आप उल्टा भी कर सकते हो। तो इट्स ऑलवेज अ सिंपलेस्ट वे। सो लेट्स जस्ट फर्स्ट डू दैट। तो उसके लिए मुझे 1 और 0 डिस्प्ले कराने हैं, सो वो भी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो आई जस्ट कॉपी दिस वन, जो कांस्टेंट मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉक लिया था। लेट मी जस्ट कॉपी दिस वन। सो हम जस्ट कॉपिंग वन मोर कांस्टेंट, और इसको भी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। और एक और हमें चाहिए, सो वन मोर इज देयर, बट इसका मैं वैल्यू चेंज करेंगे 0, बिकॉज एक आउटपुट मुझे 1 चाहिए, एक आउटपुट मुझे 0 चाहिए। सो नाउ आई जस्ट मेक द कनेक्शन, एक मिनट, let me just try this one. Now I'll just make the connection that 1 कब आए आउटपुट मेरा और 0 कब आए मेरा आउटपुट। So we have to make connections like that. Okay, so it does not look in a nice structure, so let me just do few changes. ये blocks बहुत बड़े हैं, इनको छोटा ही कर लूँ। Okay. So as I told you, जो मिडल वाला पोर्ट है यहाँ पे, इनपुट पोर्ट आपके स्विच ऑपरेटर का, उसमें ये कनेक्ट होगा डायरेक्टली, जिसको आपको कंपेयर करना है जो आपका इनपुट है। इसको स्ट्रेट लाइन में ला सकते हो। सो देन यू जस्ट क्लिक ऑन दिस एरो एंड इट गेट्स कनेक्टेड ऑटोमेटिकली। ये कनेक्ट हो गया। और ये जो अपर वाला पोर्ट है स्विच पोर्ट का, इसके साथ आपका ट्रू वाला कनेक्ट होगा। सो दिस वन, this is selected and just follow the path, it gets connected. Now these two by default ये अपने आप आपको show कर देगा और connect कर देगा, right? You just need to drag and click once, it's getting connected। तो input हो गया, comparison भी हो गया, right? What else we want? अब हमें output देखना है। input देंगे तो हमें output देखना है। so output देखने के लिए, जैसे लास्ट टाइम हमारा आउटपुट ग्राफिकल था, तो हमने स्कोप में देखा था, बिकॉज स्कोप इज प्रोवाइडिंग ग्राफिकल विजुअलाइजेशन। अगर आपको जस्ट एज अ नंबर आउटपुट देखना है तो आप एक तो सिंक में जाके देखो, अपनी लाइब्रेरी में जाके, आई शो यू लाइब्रेरी कहाँ गया, हाँ लाइब्रेरी ब्राउजर में जाके सिंक्स में जाओगे तो सिंक में यहाँ पे ना आपको अलग अलग ऑप्शन दिख जाते हैं, डिस्प्ले, फ्लोटिंग स्कोप, टू फाइल। आप अपनी आउटपुट एक फाइल पे भी डायरेक्टली टेक्स्ट फाइल पे राइट करा सकते हो। ठीक है, ये तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, हमें आउटपुट को राइट कराने की जरूरत नहीं है। सीधा वर्क स्पेस में उसका वैल्यू चला जाए तो ये वाला ब्लॉक यूज करेंगे सिम आउट, या फिर ग्राफ भी देख सकते हो, बट अभी के लिए आई एम यूजिंग दिस डिस्प्ले। सो डिस्प्ले, आई जस्ट ऐड दिस ब्लॉक टू द मॉडल देयर। तो ये मैंने डिस्प्ले यहाँ पे आ गया है, कहाँ गया ये वाला, आई जस्ट मूव इट हियर। इसका साइज छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। एनीवेज that's just with time you learn to make better view of it. Yeah, so this is done. इसने automatically उसको connect भी कर दिया है with the switch port, because that's how the hierarchy works. We know कि display कहाँ पे connect होना है, so it's automatically getting connected. That's your complete model, जिसमें हमने एक input दिया है और 2 outputs दिए हैं, और finally यहाँ पे display होगा। अभी let's just yeah, हमें डिस्प्ले में अब करेगा क्या, ट्रू या फॉल्स देगा, या वो भी हम बता सकते हैं कि क्या ये राइटिंग में कुछ देगा या क्या? हाँ, वही आई एम कमिंग टू दैट। पहले तो मैंने उसको सिंबॉलिकली मैंने मैथमेटिकल आउटपुट दे दिया ना, मैंने अपने माइंड में बना लिया कि ट्रू मेरा 1 है, फॉल्स मेरा 0 है। तो 1 देगा तो दैट मीन्स ट्रू है, 0 देगा तो दैट मीन्स फॉल्स है। उसके बाद आई विल टेल यू, अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो ट्रू फॉल्स, वो भी करा सकते हो टेक्स्ट में। अगर आप एज अ स्ट्रिंग उसको प्रिंट कराना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अभी के लिए तो मैंने उसको मैथमेटिकली ही बताया है, राइट? सो ओके, लेट्स रन दिस वन। और ये आपका इनपुट है, इनपुट आपका 1 है, डिफॉल्ट 1 था, मैंने चेंज नहीं किया है। इसको रन करते हैं। सो लेट्स सी द आउटपुट। So you can see the output coming in the display is 0, because that's true, क्योंकि जो आपका इनपुट आपने दिया है 1, वो 3 से बड़ा नहीं है, it's less than 3, so इसको 0 ही डिस्प्ले कराना था, जो आपका फॉल्स
एग्जीक्यूशन है, मीन्स आपका जो आंसर है फॉल्स है तो इट विल डिस्प्ले 0. नाउ जस्ट कीप एक्सपेरिमेंटिंग. चेंज करते हैं इस कांस्टेंट को, इनपुट में जाके लेट्स डू इट 45, रन द सिमुलेशन, इट विल प्रिंट 1. सो जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस, इट्स इजी. आपको 3 से बड़ा नंबर इनपुट कराओगे तो 1 देगा, ट्रू है 1 का मतलब, और 3 से छोटा नंबर दोगे तो वो 0 देगा. एग्जैक्टली 3 दोगे तो भी वो 1 ही देगा, बिकॉज हमने थ्रेशोल्ड वाली कंडीशन में इक्वालिटी विद 3 भी अलाउ किया है. तो एग्जैक्टली 3 दोगे तो भी वो ट्रू में काउंट करेगा. So this is just an example to show you how simply you can build a if else logic. अब इस स्विच की भी आगे जनरलाइजेशंस होती हैं, आप इसमें भी और कोड्स ऐड कर सकते हो, क्योंकि कई बार कंडीशंस हमारी इफ एल्स इस तरह के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो आई थिंक दैट्स टू बी डन इन द जो मल्टी पोर्ट स्विच है हमारा उसमें. राइट नाउ आई एम नॉट यूज्ड इट, बट यू कैन डू दैट. नाउ जस्ट लेट्स लुक एट द थिंग व्हिच Shangi was pointing out. Suppose we want to print the output. So आप ये constant के बजाय, okay, but यहाँ पे वो नहीं होगा. constant में तो क्योंकि constant ही डालना पड़ेगा, मुझे block change करना पड़ेगा उसके लिए. Let's just go to the library and find a other suitable block for it. Sources में ही जाएंगे हम, where it was. एक ब्लॉक होता है उसमें हम स्ट्रिंग टेक्स्ट मतलब जो है अपना या स्ट्रिंग के नाम से यहाँ पे. हाँ वो फर्स्ट वाले में है. हाँ जी इसी में टू स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में है ना, सोर्सेज है, सिंक्स है, स्ट्रिंग्स है. तो ये स्ट्रिंग में मिल जाएगा. स्ट्रिंग में ये टू स्ट्रिंग भी चलेगा और आपका ये भी चलेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट. सो टू स्ट्रिंग आई थिंक विल वर्क फॉर आपका इनपुट को वो एक स्ट्रिंग में शिफ्ट करेगा. बट ये स्ट्रिंग कांस्टेंट मींस हमारी आउटपुट देखो कांस्टेंट ही रहने वाली है. मींस ऐसे नहीं कि हर बार कुछ डिफरेंट उसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में. सो आई विल चूज दिस वन बेटर, स्ट्रिंग कांस्टेंट. आई विल ऐड दिस ब्लॉक टू देयर और वहां से कॉपी कर लेंगे. 2 चाहिए ना हमें. इसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा अभी. तो ये कौन मैम बट इसका कोई इनपुट तो है ही नहीं. आउटपुट है ना जो पहले इसको आउटपुट, इसको तो कंपेयरिंग कंडीशन के बाद आउटपुट देंगे ना हम. ये जैसे पहले कांस्टेंट था, देखो ये जो 1 था इसका भी आउटपुट ही था ना. हमने कहा कि अगर ट्रू होगा तो 1 डिस्प्ले हो जाए. तो अब ये हेलो को मैं चेंज करती हूँ. मैंने क्लिक किया उस पर, डबल क्लिक, आई विल जस्ट चेंज व्हाटएवर ग्रेटर, जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो तो आप लिख लो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. सपोज दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रिंट. तो ये कांस्टेंट ब्लॉक को मैं डिलीट कर रही हूँ. जो मेरा ट्रू की जगह पे था उसकी जगह पे मैं ये प्रिंट कराऊंगी. स्ट्रिंग कांस्टेंट मैंने जिसको बोला है. ये टेक्स्ट बहुत बड़ा दिखा रहा है बट यू कैन जस्ट विजुअलाइज. मैंने जूम किया हुआ है काफी. लेट मी जस्ट सी हियर. इसको कनेक्ट करना है हमने अभी. तो पहले पुराना वाला डिलीट करेंगे, अदरवाइज वो रेड कनेक्शन शो करता है, उसका मतलब उसने कनेक्ट नहीं किया है. नाउ इट इज शोइंग, सो इट्स हैविंग अ आउटपुट, यू कैन सी. और डिफॉल्ट इसको ट्रू के साथ कनेक्ट करना है तो आई जस्ट क्लिक्ड ऑन इट, इट गॉट्स कनेक्टेड. एंड सिमिलरली ये वाले कांस्टेंट ब्लॉक को भी हम डिलीट करेंगे. और ये स्ट्रिंग वाला ही हमें एक और चाहिए. सो मैं इसको कंट्रोल सी और आई एम जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग इट. इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो डबल क्लिक करके यू जस्ट राइट whatever you want to write, less than 3. Okay, sorry something. Okay, inverted commas चले गए because string है character, so you have to have the inverted commas there, otherwise does not accept that. Okay, ये arrow भी पुराना वाला डिलीट करेंगे और नया कनेक्शन बनाएंगे. That's how it looks. यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है टेक्स्ट, बट लेट्स सी. फिर से रन करेंगे हम सिमुलेशन को. वो पुरानी आउटपुट लिखी हुई है वहां पे 1. इसका टेक्स्ट बहुत बड़ा है. लेट मी सी हाउ टू रिड्यूस दैट. वो पूरा आउटपुट दिख नहीं रहा है वहां पे, अदरवाइज इट विल शो यू. मैंने काफी जूम कर दिया उसको. ये एक्चुअली विंडो में इसको बड़ा करोगे तो दिखेगा. मींस यू जस्ट नीड टू
bit move all the blocks and fitting थोड़ा सा उसका करना पड़ेगा so that your output is displayed correctly, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्प्ले जो है कहीं और नहीं करा रहे हैं, हम सेम विंडो में देखना चाह रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको आपको स्पेस देना पड़ेगा फॉर डिस्प्ले. सो इट्स योर आउटपुट. एंड अब इनपुट चेंज करते हैं फिर से. 45 था, लेट्स जस्ट चेंज एनीथिंग, say just print exactly 2. Okay, so run it again. So this time it will print less than 3. So that's how it is working. आप कुछ भी इसके अलावा भी कुछ भी print कराना चाहते हो, so that you can give as an option here. So this is an example to tell you how to incorporate this if else statement. You can give a better structure to it, but connections हमेशा ऐसे ही बनेंगे. अब अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, then you can ask. I have even given you the generalization options from here. ये कांस्टेंट की जगह आप इनपुट डेटा आप कहीं फाइल से भी उठा सकते हो, वहां से डेटा आएगा, बट उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है. आपको फॉर्मेटिंग देखना पड़ता है कि आपका फाइल का जो कंपैटिबिलिटी है विद द इनपुट ऑप्शन हियर इज कंपैटिबल और नॉट. सो यू लर्न अकॉर्डिंगली जैसे आप उन चीजों को यूज करोगे. अभी के लिए पूछ मैम. हाँ मैम हम इनपुट्स कहाँ कहाँ से देख सकते हैं? एक तो फाइल से देख सकते हैं और एक हम कांस्टेंट से. मैम हाँ, ये सोर्सेज में था ना, ये था लाइब्रेरी में जाके सोर्सेज में ये आपके सारे इनपुट्स हैं. देखो आप फाइल में से दे सकते हो. फाइल होती है जो, देखो जब आप मैटलैब, लेट मी सी मैटलैब, जब मैटलैब में ये वर्क स्पेस है आपका, वर्क स्पेस में जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट रन करते हो, ये तो मैंने अभी क्लियर कर दिया, अदरवाइज आप कुछ भी रन करते हो, सपोज a=3, तो ये वर्क स्पेस में आ गया, राइट. तो आप सीधा वर्क स्पेस से सपोज उधर कॉल करना चाहते हो वैल्यू को, मतलब आपके पास ऑलरेडी वैल्यू वर्क स्पेस में पड़ी है एज अ नंबर या एज अ एरे, तो आप सीधा उधर कॉल कर सकते हो. तो यहाँ पे जाके लाइब्रेरी में आपको यहाँ पे फ्रॉम वर्क स्पेस ये वाला ऑप्शन चूज करना है. ये वाला ब्लॉक लगाना पड़ेगा इनपुट ब्लॉक के जगह पे, जहां पे मैंने कांस्टेंट यूज किया था उसके जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा फ्रॉम वर्क स्पेस इनपुट वाला. तो इसको लगाते ही फिर आपका वर्क स्पेस में उस टाइम पे जो भी इनपुट्स पड़े होंगे उसके अकॉर्डिंग इट विल चूज. बट देन यू हैव टू मेक श्योर कि वर्क स्पेस में एक्स्ट्रा चीजें नहीं हो, क्योंकि देन इट विल आस्क यू कि वर्क स्पेस में कौन सा वेरिएबल चाहिए. इट विल आस्क, डेफिनेटली इट विल आस्क, वो वैसे भी पूछेगा, बट उसका लेट्स ट्राई दिस, इसको ट्राई कर लेते हैं. एड ब्लॉक टू मॉडल एंड टाइटल. सपोज मैंने वर्क स्पेस यहाँ पे दिया है, ये कांस्टेंट अगर हम हटा दें, इनपुट वाला मैंने हटा के इसको ये हो गया है फ्रॉम वर्क स्पेस. एक मिनट, शोइंग मी सम अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन और वेरिएबल. व्हाट इज द वैल्यू? मैंने वहां पे वैल्यू दिया था a, जो मैंने अभी वेरिएबल वर्क स्पेस में सेव किया था, मैंने उसका नाम रखा था a. So let's see whether it runs or not. You see that I did it in workspace. मैंने already वहाँ पे एक variable define किया a जिसकी value मैंने दी है 3. Let's see whether it works or not. Now this is giving me error. Invalid matrix variable specified as workspace. The matrix data must be real, double, 2 dimension, 2 columns. Okay, so for this, because I didn't explore this option first, but इसके लिए it needs 2 column data. Means it's not going to work for this case. ये जो वर्क स्पेस से हम एरे उठाने की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं चलेगा. एटलीस्ट ये वाले लॉजिक जिसपे हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे नहीं वर्क करेगा. इट मे हैव यूज इन सम अदर प्रोग्राम जहाँ पे हमें 2 डायमेंशनल डेटा चाहिए होता है टू डू समथिंग, राइट. और बाकी ऑप्शंस भी हैं, फाइल से ले सकते हो. सो वही, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. देखो हम एक दिन में ये पूरा नहीं सीख सकते हैं. आप जब आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आप उसको सर्च करके ढूंढो एंड देन यू विल एक्सप्लोर हाउ इट इज डन. बट आई एम जस्ट गिविंग यू द ऑप्शंस ऑफ कहाँ पे क्या मिलेगा. सोर्सेज में आपको सब तरह के इनपुट्स मिलेंगे, सिंक्स में आपको सब तरह के आउटपुट्स देखने के ऑप्शन मिलेंगे, और बाकी आपकी जो मॉडल की रिक्वायरमेंट्स है, लाइक जैसे मैथ ऑपरेशंस में जाओगे तो इसमें भी आपको यू कैन सी डॉट प्रोडक्ट है, मिन मैक्स है, रेसिप्रोकल है, स्क्वायर रूट है, सम ऑफ स्क्वायर्स है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू आर एबल टू सर्च फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड फिट इट ओवर देयर.
Yeah, so it didn't work with that. I'll just do this older one. I had this. Yeah, so please all of you try this. You can customize it according to you. कुछ कुछ changes करके देख सकते हो and then let me know if you face any difficulty in that. मैम इसको सेव करके रखना है इस फाइल को भी? हाँ मीन्स करके रखना चाहते हो कर लो, बाद में इसमें वेरिएशंस करना चाहते हो कर लो, एक बार सेव कर लो, उसके बाद लेटर ऑन यू कैन डू सम चेंजेस अकॉर्डिंगली. आप स्विच पोर्ट को थोड़ा और ऑप्शंस एक्सप्लोर करके देखना कि व्हाट एल्स वी कैन डू विद इट. Let me just. Ma'am, on the bottom of screen, ma'am, it's written 420%. And ma'am, there is something variation in some screens. Ma'am, what is this, ma'am? ये 420% ये है, इसका व्यू जितना मैंने जूम किया हुआ है. Okay, ma'am. या ये इतना बड़ा जूम किया हुआ है मैंने इसको. एक्चुअली जब हम ओरिजिनली मॉडल बनाते हैं तो ये स्पेस बार से बिल्कुल फिट हो जाता है. आप यहाँ जूम पे क्लिक करोगे तो और ज्यादा जूम कर देता है. फिर से स्पेस बार प्रेस करूंगी, फिर से वो विंडो में फिट हो जाएगा. Okay, okay, ma'am. या तो इसका कोई ऐसे आउटपुट नहीं है क्योंकि इसका आउटपुट यहीं पे है, तो आप इसको एज अ सेव करके रख सकते हो. और इसको एज अ आउटपुट जब आपको अपनी फाइल में आउटपुट दिखाना है, क्योंकि पिछले वाले का तो हमारे पास ग्राफ था, तो आप उसको प्रिंट कर सकते हो, वहाँ पे सेव कर सकते हो. इसका आप मॉडल को ही डायरेक्टली वहाँ पे यू कैन हैव अ प्रिंट ऑफ दिस फिगर ओनली. या यू कैन जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द मॉडल. ये तो मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया है, डजंट लुक दैट नाइस. इसको थोड़ा सा अच्छा सा बना के देन यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड दैट यू कैन पेस्ट एज योर आउटपुट इन योर फाइल, बिकॉज इसका अलग से कोई आउटपुट नहीं है और इसको सेव करके रख सकते हो. Anybody else wants to share the screen? Ma'am, I've also done mine. Okay. Yes, rest of the people, please show up. It's not just 2-3 people are listening and doing. I want everybody to do it. Yes, Nupur. Is Nupur there? Hello? Cannot hear you. Yes, ma'am. Yes, Nupur, are you done with it? मैम एक्चुअली मैम मैं लेक्चर मोबाइल से लगा रही हूँ, मेरा लैपटॉप डैमेज पड़ा हुआ है अभी, तो मैम इलेक्ट्रिशियन सही कराना है मैकेनिक से. Okay. ठीक है, चलो. But do practice it later on. ओके मैम. Yeah, so with that I'll be just taking. हमारा कब तक है टाइम हमारे पास? कितने बजे लैब? 10 minutes और है. हम 6 o'clock तक होती है. 6 o'clock. So we have 10 minutes more roughly. So let's just take one more example of this. So let me just go to this share screen. Okay, so the third example which we are going to do is to use the integrator
operator. So I'll just show you how to use this integrator operator. So you can later on practice. I'll give you some few questions to practice yourself also in the practice sheet where you can use different mathematical operators. So for the timing, I'll be just taking a very simple example, and then you can add later on the difficult examples to the same. Okay, so where it is. Let me just share the screen again. Yeah, so again, I'll be just saving the older one. You name it, say if else logic. Now I'll start with the new one, new blank model. Control N gives you that. Okay, so we want to see integration of certain functions. So let's just begin with a simple example. I'll start with the constant only. Later on, you can change your function. Let's search from here only. So the constant I am searching on the window of untitled model. So this constant it has given to me. I'm not just changing the value of this. This is 1. Now I want to integrate it. Okay, so I have to have an operator, a mathematical operator, which is going to integrate this one. So let's search by double clicking here, integrator. Yeah, so when you type integrator, it's coming in the first option, integrator. So you have various options, integrator, second order भी मिलेगा आपको, और भी मिलेंगे, but let's just first begin with the simple one, integrator. So this is, I want to integrate, और ये without limits है, it's not going to ask any limits to me. Let's see. और अभी हम इसको view करना है. Okay, let's connect this one. And now you want to say view this in scope. Yeah, so when you will enter it, it will again ask for input ports. So let's have the 2 input ports this time. So 2 input ports, because I want to see the input as well as the output. Means before integration also I want to see, and after integration also I want to see. So that is going to be connected like this. And now I'm just pressing the space key. That's the model we got. We have a constant, we are integrating it. So this 1 by s is you doing the integration, and then it will show you in the scope window. So let's just run this one and look at what we have got. Yeah, so you can see I have got this one. So this blue line is the constant 1. This is my original function. And you know what is the integral of 1? So it's, if you take your variable as say x or whatever, it takes s, but if you take it x, one kind integral with respect to x is x only. So you're actually going to see the function y equals to x, which is a straight line, obviously. So you can see that plotted here, and it's actually the equation. It's actually the line y equals to x. You can see from here. 0 pe value 0, 1 pe 1, 2 pe 2, 3 pe 3. So you can see that this is real. This is really the integration of that function 1. So that's it. So this was about the integration example. आप इसमें और भी changes कर सकते हो. Double integrate operator add करके देख सकते हो. So double integration एक बार में ही कर सकते हो या step by step भी कर सकते हो. Okay, so say I want to add another integrator operator. Initial condition it asks for 0. By default आप दे सकते हो. So let me just connect it here, in between here. Okay, ये मुझे delete करना पड़ेगा पुराना connection. This I have to connect these two and these two. So what I have done is I'm doing 2 times integration. First constant integration with this operator, then one more integrator is there. It will integrate it one more time, and then finally that output will go to the scope. अब मुझे स्कोप में तीनों स्टेप्स देखने हैं, कांस्टेंट भी, उसका वन फर्स्ट इंटीग्रेटर भी, उसका सेकंड ऑर्डर इंटीग्रेशन भी देखना है. So I'll increase the number of ports by going into the signals and ports. Increase the number of input ports to 3 से. तो तीसरा पोर्ट भी इसने क्रिएट कर दिया है. So I want to see the which one. See first वाला तो ऑलरेडी दे रहा है, सेकंड फाइनल वाला भी कनेक्टेड है, बीच वाला कनेक्टेड नहीं है. So this I want to connect with this one.
So when you will make the connection, sorry, what happened? Let me just delete this one. Yeah, it is connected now. Earlier it was not getting connected. So now let's run the simulation again and see. Control T is the shortcut for simulation. You can press the run button. Now you see the scope output. So you can see three curves. The constant one is the blue one, the original function. The red one is the one-time integration. That's y equals to x. And obviously y equals to x, if you integrate one more time, so you get x square by 2. So the yellow curve which you are going to see as is the one-time second order integration of the constant x square by 2. So this file you can save, as I told you earlier, print to figure and then save as PNG or PDF, whatever you want. And you can also save this model. So you can try experimenting with this Simulink and try various examples. I'll give you few more examples in that sheet whose output you can paste over there. And yeah, so just keep exploring this Simulink and try finding applications which are more relevant to your other areas. So yeah, Ishangi, you asked me about that PID, right? In the beginning. So maybe we'll take up that some other time. Today we were just doing these basic examples. So next time depends upon what we cover in class. We'll accordingly look at the lab experiment. Excuse Yes, me, ma'am. yes, Aniket. मैम जो इंटीग्रेटर में 1/s लिखा हुआ है, Mm-hmm. तो does this works on Laplace transformation? Yes, actually. तो मैम ये फंक्शन चेंज कैसे करना होगा अगर हमें करना होगा तो 1/s को कुछ और करना होगा, 1/x स्क्वायर करना होगा कुछ और करना? This you have to see, because see, if you double click on it, let me just see. If you double click on it, it is not showing you any option of changing this, because it's a continuous time integration. So it's a default kind of a symbol for it. I don't think so you will be able to change function from here. Means if you want to do anything else, उसके लिए आपको नया कुछ function बनाना पड़ेगा. वो भी options होते हैं कि आप अपने कोई mathematical function operator apply करना चाहते हो, ये आपको वो वाले ऑप्शन में मिलेगा जहाँ मैथ ऑपरेशंस है. बट ये जो एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट ऑपरेशन है यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा. ये जस्ट अ सिंबॉलिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, बिकॉज डेफिनेटली इट्स यूजिंग द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म वे, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका थ्रू इंटीग्रेशन होता है. डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका इज यूजिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. सो बेसिकली लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन आर रिलेटेड विद ईच अदर. हम जैसे 1 उसके बाद 1/s और 1/s है, तो दिस मींस 1 into 1/s into 1/s उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? या 1b is the constant. Yeah. ठीक है मैम, थैंक यू मैम. Okay, then the next people have started entering. They have been waiting. I don't know what. Okay, we are not short of. Fine, I'll just take your doubts in this. You keep on practicing this, and I'll see you on next Thursday in lecture. I'll be sharing this file probably with you by tomorrow. Yeah. Good evening. Bye bye, everyone. Thank you, ma'am. Thank you.